Peace and blessings, everyone. And finally, we are back with another episode of Wobble Hearts. और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या format है, because every day, we are here, we bring another format, and that's the unique selling proposition of our show. We bring in people from the diverse background with diverse experience from diverse sectors so that we can capitalize on diverse experiences they have, and we can also shake their mind, and heart and body and soul to bring the best out of them. So today we have another personality with us. She is a very young and dynamic person who is emerging up very nicely. Dr. Iram Irshad Bhatti, who is basically positive psychology interventionist, and she is also a leadership coach, and she is also performance and people analyst. She has 15 years extensive background in leadership coaching in multiple organizations, including both private and government sector, and she's also involved in the life skills coaching of the youth. We will really look forward to talking to this young and dynamic force. And what is this positive psychology? That's a new concept to me as well, and I would like to understand more from her. So Iram, how are you? Thank you so very much, and thank you for the brilliant introduction. I'm good. कहा यह जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली बातों के डॉक्टर होते हैं, राइट? और साइकोलॉजी को इस तरह से भी लिया जाता है कि दीज आर द पीपल हु एक्चुअली सेल द होप और ब्रिंग होप इनटू द पीपल. अब होप जो है वो तो एक पीर फकीर टाइप इंसान भी ले आता है, राइट? और अगर आप बातों के डॉक्टर भी कहलाते हैं, तो ऐसा क्या है इस पॉजिटिव साइकोलॉजी में विच रियली डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम दीज पीर एंड फकीर्स, होप सेलर्स और बातों के डॉक्टर, एंड हाउ डू यू एक्चुअली define your unique selling proposition? I would like to understand that. Thank you very much for putting up this question. For many of the people around जो कि confuse करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी को मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी के साथ, तो सादा लफ्ज़ों में आई वुड से कि ये वेलबींग हैप्पीनेस की साइंस है. और साइंस से मुराद ये है, ये फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं हैं, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फील्ड है. और आज से नहीं, ये अराउंड कोई फॉर पास्ट 50-60 ईयर्स से जो है वो मार्टिन स्लिगमैन वाज द इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ दिस फील्ड, जो कि जिसका मानना ये था कि इंसान अपने डिसफंक्शनल डिसऑर्डर्स के ऊपर तो काम करता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर क्यों नहीं काम किया जा सकता, क्यों नहीं उनको बढ़ाया जा सकता. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो फील्ड है स्ट्रेंथ बिल्डिंग की, जो कि एविडेंस और रिसर्च बेस्ड है. Very nice. So how you differentiate yourself, and if I ask you that what is Iram's unique selling proposition as a positive psychologist, positive psychology interventionist, so how would you define your unique selling proposition or your 3 strengths in 3 words? Okay, so I would say that mainstream जो आपका ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, it's all about feel good and escape route देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि अपनी पेन को नम कर लें और अपने challenges को address ना करें. मेरी specific field जो है वो आपको अपनी problems को heads on face करना सिखाती है, और आपको वो आपके inner resources देती है, psychological, emotional resources से हम आपको equip करते हैं, जो enable करते हैं आपकी sustainable growth को, वो चाहे individual level पर हो और वो चाहे organizational level पर हो. वो दोनों सूरतों में आपको आपकी प्रॉब्लम का जो है वो लास्टिंग इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेकर जाते हैं. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी दी है, दैट यू ब्रिंग इन दैट इनर रिसोर्स within the individual and as well as organizational level. So my question to you, while listening to your thoughts, that came into my mind, कि अगर एक individual है within the organizational setup, if we talk about, आपने उसके अंदर एक स्पार्क क्रिएट कर दिया, या उसको आपने इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी that he or she started really feel like putting in effort to capitalize on that area. लेकिन अगर organizational environment उसको वो nurture करने में या वो चीज़ capitalize करने में अगर वो enabling environment provide नहीं करा, then what this positive psychology, where it comes into play, उसमें क्या ये role play कर सकती है कि regardless of the toxic environment or the culture the individual is operating in, he or she still feels like performing?
वेरी गुड क्वेश्चन. आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन कि मैं कुछ भी उनके अंदर इंस्टिगेट या इम्प्रिंट या इम्प्लांट नहीं करती हूँ. मैं एक्चुअली जो कंडीशनिंग हुई हुई है उसको हम डस्ट ऑफ करते हैं, ब्रश ऑफ करते हैं, और आपके जो आप जिससे नेचुरली ब्लेस्ड हैं स्ट्रेंथ्स के साथ, हम उनको वो अवेयरनेस रेज करके, वो पर्सनालिटी असेसमेंट के ज़रिए, वो कल्चर असेसमेंट के ज़रिए वो हम आपका जो है वो उसको हाईलाइट करते हैं. एक तो ये एरिया है. दूसरा, जब हम कहते हैं कि मैं आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर लाने में मदद कर रही हूँ, और बाहर जब आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो आपके पास चॉइसेस होती हैं. हम इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी के ऊपर काम करते हैं. अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, आपको कोई चीज़ इरिटेटिंग लग रही है, तो आप उसके लिए फिर ऑब्वियसली उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. आप जब उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप ही वो चेंज एजेंट बन जाते हैं, जो फिर पूरे कल्चर को जो है वो रिफाइन करने में या ट्रांसफॉर्म करने में मदद दे सकता है. एग्जेक्टिव कोचिंग और जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग है वो आई थिंक दोनों एरियाज पे हम डील करते हैं. किस तरह से पॉजिटिव कल्चर को डेवलप किया जा सकता है और किस तरह इंडिविजुअल्स की पर्सनल ग्रोथ को इंश्योर किया जाए. Very nice. And especially after the pandemic, how do you foresee how important or essential this positive psychologist role is emerging up nicely, and how much organizations will be needing such kind of interventionists within their organizations? आई थिंक कि आगे आने वाले टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को, एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. और जो पुराना हमारा मॉडल था जहाँ पर हम सैलरीज बढ़ा के या थोड़े बहुत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे के हम डेकेड्स लॉन्ग लॉयल्टी का जो है वो ट्रेड ऑफ करते थे, मेरा ख्याल है वो आने वाले वक्त में आउटडेटेड हो जाएगा. इस वक्त हर एम्प्लॉय एक होलिस्टिक ग्रोथ प्लान चाहता है कि मैं ना सिर्फ सैलरी मेरी इम्प्रूव हो, बल्कि आप मुझे करियर प्लान जो है वो क्या ऑफर कर रहे हैं. तो साइकोलॉजी हो या आपका जो ह्यूमनिस्टिक पॉलिसीज हैं, आई वुड से बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं साइकोलॉजी के साथ इंटर रिलेटेड है, वो सारे के सारे आई थिंक वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इन द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वेरी नाइस. आपने एक और दो टेंजेंट्स और टच किए हैं. उसमें वन ऑफ माई मेंटोर्स टू होम आई रियली कंसिडर एज माई टीचर, एज माई मेंटर, मिस्टर खालिद नकी. He has been my boss for like 6.5 years, and he used to say one statement that your career plan is part of your life plan. Am I right? This is what he used to say. And that's, the thing organizations really need to keep in their mind while designing any kind of, engagement policies. Humanistic approach definitely has to be the center of such kind of policies. And culture should also, revolve around such kind of things, because after this pandemic, post-COVID scenario, care has emerged as a new currency, Yeah. And that's very important that, you are providing or taking care kind of, what should I say, जो आप बात करते हैं कि Maslow की जो hierarchy है, needs of hierarchy है, अगर if you are keeping that in mind and the individual in mind, and then you can really come Empathy. up, exactly, empathy and care, you wrap all of these policies around this thing, और उसके बाद आप उसको business goal से या अपनी profitability के साथ link up करो, then nobody would feel like leaving the organization, and retention will not be a problem anymore. That's true. So if you're looking a person who is who can really resolve such kind of issues, then Idea Training has Dr. Iram Irshad Bhatti, who brings with her like 15 years diversified experience from all the sectors, including multinational, government and private sector. So if you're really looking for the solutions, do contact us on the below line. So अगर हम organizational context की बात करें, industry की बात करें, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, you have been interacting with different kind of clients, तो ऐसी क्या problems आपने देखी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, कल्चर को लेकर, टीम्स को लेकर, लीडरशिप को लेकर? What are the areas you really thought that these are the areas which really need to be fixed?
Okay, last year I launched my program, which is my signature program, with the name of workplace happiness. और हमारे core areas जो हैं वो हैं 3 areas: people management, performance management and positive culture development. और ये इनके नीचे बहुत सारे आपके इंडस्ट्री के challenges आते हैं, जैसे conflict management है. people management में सबसे बड़ा जो challenge है वो ये है कि आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करें अमंग टीम मेंबर्स एंड ऑन द सिस्टम, ऑन द सीईओ. तो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो दैट इज़ वन ऑफ द ग्लू दैट इज़ यूनिक अबाउट माय प्रोग्राम, जो कि शायद ज़्यादा टीम बिल्डिंग पे फोकस होता है कि किस तरह से डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ से लोगों को इंगेज किया जाए. और मेरी चूँकि कॉग्निटिव एरिया है या फील्ड है, मेरी कोशिश होती है कि हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करके टीम्स को डेवलप करें. और जहाँ तक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में लेटेस्ट जो एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स एंड टूल्स हैं, हम उनके साथ जो है वो आपकी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस को इन्हांस करने की स्ट्रैटेजीज बताते हैं. Very nice. Because if we talk about organizational culture, what we see, this is just tip of the iceberg. उसके नीचे जो है एक organization के अंदर उनके beliefs हैं, उनके systems हैं, उनके processes हैं. People are there with a diverse background, right? And then you have, you talked about the psychological safety, what kind of rituals, how success is celebrated, and you do the entire cultural mapping. Yeah. And, and definitely, if you have a resource like Iram with you on board, then you will be able to have, a better picture that what is your current organizational culture and what is your desired, organizational culture, and how you can future-proof your organizational culture. Because at the end of the day, it's all about people who are driving the business. आपको लगता है कि ये ऐसे issues या ऐसे problems हैं या ऐसी ये चीज़ है जो एक दिन में fix हो सकती है? Yeah, it is something which needs to be catered and, mapped out and, resolved in a proper way. So what do you think? Is it a one-day activity or what is it? आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर ट्रेनिंग इंडस्ट्री के, जहाँ पर हम ट्रेनिंग को एज ए फिलर के तौर पर जो हमारी रिसेप्शन रही है हमेशा से, वहाँ से हम इसको री इन्वेंट करें और हम इसको सीरियसली देखें दैट वी आर जेन्युइनली इन्वेस्टेड इन पीपल्स डेवलपमेंट. और पीपल डेवलपमेंट जो है इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड सस्टेनेबल एफर्ट्स आई वुड से. तो अगर आप कोई भी काम ओवरनाइट चाहते हैं तो शायद वो उस तरह से आपको एक सस्टेनेबल रिजल्ट ना दे सके, बट आपको पीरियोडिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. आफ्टर एवरी 3 months फॉलो अप सेशंस होने चाहिए. आई पर्सनली टेक अप 9 months कॉन्ट्रैक्ट्स, आई टेक 4 months 6 months के पैकेजेस हैं. आई डोंट गिव एनी सोल्यूशन ऑफ लाइक 1 day 2 day. यस, टिप्स एंड टेक्निक्स में आप बड़ा अच्छा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्चर चेंज हो, आपके लोगों का जहन साजी करने में हम कामयाब हो सकें, तो आई थिंक उस पर आपको थोड़ी सी सस्टेनेबल एफर्ट जो है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए. Very nice. Training is an investment. It's not a liability or a filler. Neither should be treated or perceived this way. And if you are really looking for such kind of properly designed intervention-based solutions, then do contact us at the Idea Trainings. We have Dr. Iram Irshad Bhatti and a lot more resources like her who are, well-learned professionals in their fields. And do download Idea Trainings calendar and we will keep you posted. And we will see you in the next session. Thank you so very much.